I'm Yatin Mota. Well, so no respite for the bulls here, and the new year seems to have gotten off on a bad note if you're on the long side of the market. Well, third consecutive days of losses, the Nifty and Sensex closing deep in the red, and now the Nifty falling below the 17,900 mark. So, big struggle there for benchmark indices at this point in time. Mid caps too have joined frontline shares in the downtrend. Yesterday they had managed to make a fairly good comeback, but today they too were under selling pressure. IT and bank shares among the prominent losers today. Auto shares somewhat escaped the carnage, however, they too closed in the red. The India Volatility Index is up by close to 1% and now is above the 15 mark. And in the F&O market, well, long positions being built, huge buildup of long position in futures of GNFC, MRF and Astral, while short positions are being seen in futures of Glenmark, Coal India, Dabur and ONGC. Whenever you wear the red shirt, market falls. Yes. Last time जब सेंटो ने लाल शर्ट पहनी थी और वो जो पीछे आपको बेयर दिख रहा है ना, वो सोवियत बेयर है, रेड कलर का होता है. So correlation है. Well, definitely next time probably, and since green is not really allowed given the chroma setting, probably I will have to look for some other color shirt to wear. Yeah, Yatin, but what do you make of it? Is the uptrend finally been broken? So I think technically, if you look at it, yesterday when we were speaking to a couple of technical analysts, market experts, now they do believe that budget in terms of taxation is something everybody will be keenly watching out for, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट है, वो किस हिसाब से सरकार इस टाइम एडजस्ट करती है, क्योंकि काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस इंडस्ट्री से आए हैं, खास करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से. तो उसको किस हिसाब से लेती है सरकार, उसका शायद स्ट्रीट को फेयर है. अगर हम एफओएमसी की मीट्स कहें या अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, तो रिजल्ट सीजन के पहले आईटी में आपने 2-3 दिन तक लगातार बिकवाली देखी है. इनफैक्ट इन्फोसिस, टीसीएस की बात करें तो स्पेसिफिकली जिसके रिजल्ट्स अगले हफ्ते आने हैं, यहाँ आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है. तो मार्केट में कॉन्फिडेंस काफ़ी वीक है. इनफैक्ट बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर था सेंटो जो मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वहाँ भी कमर टूटती हुई दिखाई पड़ रही है. इनफैक्ट एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन सभी 4 बड़ी बैंक्स में लास्ट 2 दिनों में अच्छे वॉल्यूम के साथ बड़ी बिकवाली हुई है. Well, so the last pillar of the market too is broken in Yes. some way, it would be fair to say that. Well, and with that, let's take a quick check on the stocks on our radar this afternoon, starting with MRF. Stock was among the few which managed to hold ground in a falling market and has also been one of the best performers of the week, up by close to about 5%. In general, tire stocks have had a good run this week, and the big reason for that mainly is the steep fall in crude oil prices. Now, rubber prices anyway have been steadily falling over the last 6 months, and now with crude prices also coming off, this is expected to boost the operating margins of tire companies in general, MRF included, and MRF is the leader of the pack among the most expensive stocks as well. Now, demand has been fairly steady both from OEMs as well as replacement market, according to Money Control Pro analyst Nitin Agarwal, and he says that on a FY24 estimated basis, the stock is now available at close to about 26 times, which is not very expensive given that the demand outlook is pretty strong. The chip shortage has eased considerably, and with that auto companies are set to increase production in the coming days. बट एक प्रॉब्लम मुझे एमआरएफ में लगती है कि शेयर होल्डर्स को कुछ रिवॉर्ड नहीं किया. ना उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया, ना इन्होंने बोनस शेयर दिए, ना इन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया. तो कंपनी के फंडामेंटल्स अपार्ट शेयर होल्डर्स के लिए कुछ कर नहीं रहे वो. But at the same time, there is a fourth element as well, Yatin, which is capital appreciation. I think that is where investors have no reason to complain at all. This has clearly been one of the best performers over the last many years now. करेक्ट. तो देखते हैं किस हिसाब से ये टायर स्टॉक्स मूव करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गिरते क्रूड में इनके रॉ मटेरियल्स पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है. एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे है आज, वो है आईडीबीआई बैंक. लगभग 7-7.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक में आज कारोबार हुआ. लगभग डेज हाई पे आईडीबीआई बैंक बंद हुआ. 2 कारण. सबसे पहले कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ने मंगाए हैं आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के लिए, वो मियाद यानी वो डेडलाइन इस हफ्ते ख़त्म हो रही है. शायद आपको अगले हफ्ते बिडर्स की लिस्ट मिले किन्होंने अपना
इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है IDBI बैंक में हिस्सा खरीदने के लिए, तो शायद उसके पहले स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट है। और दूसरा बड़ा रीज़न क्यों ये स्टॉक में आज मोमेंटम था, वो इसलिए था क्योंकि सेबी ने न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से IDBI बैंक को अप्रूवल दे दिया है जिसमें वो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग पब्लिक में क्लासीफाई कर सकें। इसका फ़ायदा ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो आने वाला है उसको लेके हो सकता है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट के पहले ये होना ज़रूरी था। LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी 2 को प्रमोटर्स हैं कंपनी के, और एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जब आता है तब उसकी जो शेयर होल्डिंग कंप्लायंस हैं, मिनिमम शेयर होल्डिंग कंप्लायंसेस हैं, ओपन ऑफर है, उसके लिए ईजी हो जाता है इस प्रकार का रिक्लासिफिकेशन। तो सेंटो मुझे लगता है ये IDBI बैंक के लिए जो डाइवेस्टमेंट होने वाला है, अपार्ट फ्रॉम द मार्केट कंडीशंस, ये एक चीज़ आप वॉच कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे ग्लोबल बिड्स आने की उम्मीद है। वेल Yatin, I think if someone is looking for a trading opportunity, then probably IDBI Bank makes the cut, because on a long term basis the stock has never really delivered Correct. value for its shareholders, and as seen with most divestment candidates, you need to play that trade very cleverly, because if you're caught on the wrong foot for whatever reason, then you'll be left stranded with that. And even in this entire banking sector rally, there's been one stock that has actually gone nowhere. So Yatin, I would really be cautious about this particular stock. So let's see how things shape up on asset quality and the strategic divestment. Which is the next stock, Santo, on your list? Well, Cummins India is the next stock on my watch list. This stock too managed to hold ground in a falling market today, and again has been one of the steady performers this week. Now, the Cummins India is largely a play on the capex revival story, and it's been consistently performing also last many months. Now, one of the factors which is probably not in favor of Cummins India is that many analysts have pointed out that it's fairly expensive and offers little upside, but it's managed to kind of defy all the naysayers and still post decent gains. Now, according to HDFC Securities, the outlook remains quite strong, because there's been strong demand from sectors like pharma, biotech, and also retail, commercial realty and data centers. Besides this, the new pollution control norms, that is a challenge, right? Yeah, that will, because that is a big thing for diesel generators. I think काफी सारे norms वहाँ आ गए हैं जो शायद इसके core business impact कर सकते हैं. Yeah, but there is another angle to it, Yatin, which is that these norms will come into effect from July of this year. Now we are in 2023. I forget that. But at the same time, to beat that deadline, a lot of buying is likely to happen, which the pre-buying which typically you see before a particular deadline, which then could boost the numbers for this half, the second half of the year. The first half has already been strong, so that probably explains why there's been a fair bit of interest in Cummins India. Okay, तो ये टेक आ रहा है सैंटो की तरफ से Cummins India पे, लेकिन दूसरा जो स्टॉक है वो Cummins की तरह ही है, लेकिन ज़्यादा कंज्यूमर फेसिंग है, वो है Havells. बड़े दिनों बाद इस स्टॉक में आपको खरीदारी देखने को मिल रही है. ऑब्वियसली स्टॉक काफ़ी दिनों से दबाव में है, स्पेशली लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स के बाद, लेकिन अब अगर आप आज का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में 4% का एडिशन हुआ है. जैन सीरीज़ में फ्रेश बाइंग दिख रही है, और वोल्टास और Havells ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो ट्रेंड को बक कर रहे हैं. शायद जो फॉलिंग कमोडिटी कॉस्ट है इनको शॉर्ट टर्म में हेल्प करेंगे मार्जिन्स को रीबिल्ड करने के लिए, और शायद जो डिमांड थोड़ी बहुत रह गई थी पिछले क्वार्टर की वो अब फिर से आना शुरू हो सकती है. तो Havells एक ऐसा काउंटर है जो प्योर प्ले डोमेस्टिक कंजम्पशन पे निर्भर है, और अगर आप FMCG कंपनीज के बयान देखें तो रूरल मार्केट्स अच्छे से रिवाइव होने के आसार दिखाई दे रहे हैं सेकेंड हाफ में, और शायद Havells जैसी कंपनी को सेंटो इसका बेनिफिट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है. Well, some bit of renewed interest in Havells of late, but Yatin, if you notice, the stock has been underperforming since its second quarter numbers. That's where the big disappointment has really been for the market. And again, if you look at the management commentary also immediately after the second quarter, that didn't seem very positive. But then again, it's fairly strange that at this point in time, when the overall outlook on the market is bearish, some bargain hunters seem to be making a beeline for Havells. So this could either indicate that definitely they know something that the rest of the market doesn't know, or that probably they feel that it has now come to a point where maybe the risk reward ratio is pretty favorable. Correct. Well, and on that note, we wrap up this edition of Closing Bell. Thank you for watching, and we'll be back with you again Monday at 9 AM. जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.